So thank you everyone for making it possible, making this program possible in the first place. बहुत साथियों के मदद की वजह से ये प्रोग्राम आज संभव हो पाया है, उसके लिए पहले धन्यवाद सबको. A few of us individually kind of came together as friends of Stan to be doing this program, also with a conviction that 2 months after Stan's death, since 5th July 2021, rather his murder, there is enough reason for us to physically gather here today, साथ में आना, to make sure we keep both his work, life, as well as his memory alive in as many ways and as many political ways as possible. So without doubt, this is a political gathering of activists, friends, academicians, lawyers, political leaders who believe that the murder of Stan probably epitomizes the worst that BJP's New India is representing. And I think that's where we would want to start the program, including the fact that we have had to run around to get even a space in the city to do this program was interesting and exercise. But here we are at the Constitution Club, which we were joking about it earlier, saying that it has become some sort of a club de constitutionale now. It's no more the Constitution Club where everything is charged. We are even deciding not to have a live telecast or live streaming from here because of the fact that it's coming at a very, very high cost, because if you check your mobiles, you know that there's no range inside. So we need a cable connection support, etc. Anyway, so we are struggling with the times in many, many ways, not just in one. A special thanks to Prakash for making this book possible and connecting us through this book. Dr. Prakash Louis, known to almost all of us, I'm sure, has been a friend, comrade, a co-traveler for very many years, and someone who has consistently been a voice of secularism, sanity, and progressive values within the Jesuit institutions, but also largely outside of it. And his contribution has been not just as a Jesuit priest in this country, as we know, but has been in the political journey of understanding people's resistance, people's movements across India. I mean, his thesis started with the study of the Naxalbari movement, and then he has gone on to do several writings on these. I'm very, very happy and inspired by the fact that Prakash has given us a book in such a short time, though his work has been, his search has been probably for very many years with Stan, and without Stan when Stan was taken away by the state. Thanks to the Media House publication, Father Xavier is here, and friends for bringing out the book in quite phenomenal time. That has made this collective possible. Request all the friends, there are enough chairs here, please come forward. Ashabhai, Prakash, Rajeshbhai, Raja, all of you, please come forward. Amit, Ashish, Evita, सबसे request है कि please come and sit down. We don't need to. We have spaces here. As I said, not just the last 2 months since Stan's murder, but also in the last 2+ years of the incarceration of several of our friends in, be it the Bhima-Koregaon conspiracy frame. And what I mean by conspiracy is, of course, a state conspiracy against people who have been working for different sorts of rights of communities, people, and who have been making social interventions. And since the last 2+ years, or also now several years, the battle that has been going on for resources between the Adivasi community in Chhattisgarh and the state, where there's a Maoist party in play there, has also been very, very complicated. I mean, Annie is here. On the one hand, you have had political efforts by parties like the CPI for very many years in Bastar, in many of those areas. While on the other hand, you have had a clear
branding of anyone who stands for the rights of Adivasi community as a Maoist uh, by the different versions of the state and elected governments that we have seen in the past. So those battles that stand represented, be it in Chhattisgarh, be it Jharkhand. Thank you all for joining. I don't want to take any more time. I request Dr. Syeda Hameed, our chair our moderator for the first session, to kindly come on stage. I also request the 4 speakers in this session. So we will do the book release, the formal release of the book immediately after this first session is over. The program is divided into 2 parts. There is a session where from lawyers like Advocate Vrinda Grover. Vrinda, I didn't give you a doctorate, just like that. Sorry about that. Vrinda to Nivedita Menon, Professor Virginus Xaxa, and Prakash Louis, the author himself. We request all of you to come on stage. Please join us. Thank you all for joining us. And so the frame of the discussion today is that, Vrinda will actually talk about the Bhima-Koregaon. Vrinda ji जो है Bhima-Koregaon मसले के ऊपर, cases के ऊपर, UAPA के ऊपर बात करेंगे. Professor Virginus Xaxa, Adivasi resistance or Stan. Looking at Stan's life and looking at the whole framework of, from Pathalgadi to the Adivasi movement. Professor Xaxa will speak about that. Then we have Nivedita Menon. Professor Nivedita Menon will speak about the book and her reflections on the book. An important political journey that Prakash, of course, probably individually took on, but that is joined by all of us today through this release. Also for us to take forward the battles that Stan stood for. And Prakash will be the last speaker in this session and reflecting on his own journey as well as the journey of Stan. We will conclude this. The second part of the meeting is actually mass organizations and leaders. You have friends ranging from women's organizations, farmers' unions, as well as, All India Kisan Sabha, as well as DUTA, teachers' unions, groups, friends are joining us. So that will be the second part of the session. We are also hoping that 1 or 2 members of parliament or former members of parliament will be joining us. So thank you, and over to you, Dr. Syeda. जी बहुत शुक्रिया विजयन, और बहुत मुबारकबाद हमारे पुराने दोस्त और हमारे साथी, हमारे कॉमरेड फादर प्रकाश लुइस, डॉक्टर प्रकाश लुइस को, कि उन्होंने हमको ये मौका दिया है. मैं अपनी बात दोनों ज़बानों में रखने की कोशिश करती हूँ, बट माई प्राइमरी लैंग्वेज इज़ माई प्राइमरी लैंग्वेज. तो ये जब मैंने ये किताब देखी, मेरी किताब वो रखी है, तो मेरे दिमाग में वही आया कि एक बेगुनाह कैदी, ये एक बेगुनाह कैदी की ज़िंदगी की कहानी, जो उनके कामों के वसीले से जो प्रकाश ने बहुत मेहनत करके इन रिकॉर्ड टाइम he has prepared it. And I thought in my opening remarks, I just speak for a few minutes, and then there is a very distinguished panel that I have the honor of chairing. So I'll pass it on. I'll start with Dr. Nivedita Menon. But I thought I'll just put some of my thoughts before you. So what could I bring to it? So I thought of a surah of the Quran. It's Surah 23, which is called Al-Mu'mineen. And these days, when Afghanistan is on everyone's mind, in Arabic, the one line is Bil Aitanahum bil haq wa innahum la kaziban. What does it mean? It means we have sent them the truth, but they indeed practice falsehood. To me, when I looked at this line of Surah Al-Mu'mineen, I thought that Stan Swamy was the truth, and he was surrounded by the state which symbolized falsehood. The Arabic word for it is kaziban. A man who stood for the marginalized,
आई एम श्योर उनकी जो जितनी एट्रीब्यूट्स हैं उसके बारे में आप लोगों ने, आप सब जानते हैं, आपने पढ़ा है, you have encountered it, some people have known him. Of course, I did not really meet him. If I met him, maybe Prakash will remember, but I can't immediately recall, but I have a long association with ISI where Prakash and I have been. In fact, Prakash is the one who introduced me, in a sense, to public life. I have to give you that compliment, Prakash, although you are too modest to accept it. Anyway, मुझे लगता है कि वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने लिए कुछ भी सीख नहीं किया और हमेशा जो क्रिश्चियनिटी के या जो इंसानियत के वैल्यूज़ थे, when we talk about values of humanity and humanism, and of course the value or the best values of the Jesuit order, those were the values that he imbibed in himself to serve those who have always been at the receiving end for centuries. तो जो सबसे ज़्यादा marginalized थे, जो सबसे ज़्यादा गरीब थे, जो सबसे ज़्यादा deprived थे, उसके लिए Father Stan उसके लिए खड़े थे, and till the end against a vicious state, he stood for what he felt was the truth. So the book is not just about Father Stan. It's also a record of the struggle of unsung women and men who have also followed the path. जो Father Stan ने जिस रास्ते को ब्लेज किया था, वो भी उस रास्ते के राह गुजर थे, वो उस रास्ते के राहगीर थे, उस रास्ते के रहबर थे, जिन लोगों ने Father Stan का रास्ता चुना और वो भी उन लोगों के साथ खड़े थे. एक ऐसा सबक है करेज का जो हमें फादर स्टैन की ज़िंदगी से जो हम सीख सकते हैं. और मेरे दिल में जो एक लाइन आती है जो मैं आई एम अ biographer and I'm done a lot of work, probably today I feel I'm a very small person, but today probably I'm the world's authority on Maulana Abul Kalam Azad. The words that he used was, again I'm quoting in Arabic, Amr bil Maruf nahi anal munkir, जिसका मतलब यह है enjoining the good and forbidding wrong. Amar bil Maruf nahi anal munkir, enjoining the good and forbidding the wrong. जब मैं these lines are like a takiya kalam, if you understand that word, of Maulana Azad. मतलब यही एक चीज़ की वो बात करते हैं और मेरे लिए Father Stan stands for that. तो मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहती आपसे, बस एक मौलाना आज़ाद ही के आईने से, against the prism of Maulana Azad, I want to quote few lines from a statement that he made 100 years ago, which was when he was being sent to Alipur jail. He made this statement in front of the magistrate. और मैं इसको पहले आपके सामने उनके अल्फाज में पेश करूँगी और फिर वो उसका इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन, because I think this is what Father Stan is all about. And this statement is called Qaul-e Faisal, which means the last judgment. I think Pancholi Saab is here and he may be one of the persons who have also read Maulana Azad, so I'm glad that he is here to listen to this. So standing in front of the magistrate, and it was 1922 and this is 2021, he spoke before it was a written statement and it was translated by Nehru himself. So I did a lot of his translation, but this one is not mine. उन्होंने कहा था ये तारीख का एक दिलचस्प चैप्टर है, ये तारीख का एक दिलचस्प चैप्टर है. हमारे हिस्से में मुजरिमों का कटहरा आया है और तुम्हारे हिस्से में मैजिस्ट्रेट की कुर्सी. आओ इस यादगार काम को जल्द जल्द ख़त्म करें.
अभी कुछ दिनों तक ये काम जारी रहेगा, यहाँ तक कि एक दूसरी अदालत का दरवाज़ा खुल जाएगा। यहाँ तक कि एक दूसरी अदालत का दरवाज़ा खुल जाएगा। ये खुदा के कानून की अदालत है। वक्त उसका जज है, वो फैसला लिखेगा और उसी का फैसला आखिरी फैसला होगा। कौले फैसल। Mr. Magistrate, it is an interesting and instructive chapter of history that we are both engaged in. The dock has fallen to our lot and to you, the magisterial chair. Come, let us finish our work in this memorable drama. For some time, this work will continue until the gates of another court are flung open. This will be the court of the Almighty's law. Time will act as its judge. Time will act as its judge and pass the judgment. And that judgment will be Qaul Faisal, or the final judgment. और जब हम देखते हैं ये 100 साल पहले का स्टेटमेंट है, it is called Qaul Faisal, and it was while he was on his way to Alipur jail, and we see that 100 years later, जिन हालात से हम आजकल जूझ रहे हैं, वो हालात क्या बहुत मुख्तलिफ हैं। जिन हालात से फादर स्टैन जूझे और जिस वजह से वो एक बेगुनाह कैदी और फिर उनका खून नाहक किया एक स्टेट ने, क्या उनके हालात बहुत मुख्तलिफ थे? These are the questions and they have been responded to in Dr. Prakash Louis's book. So having said that, now it's my pleasure to invite the panel, and I'll first invite my dear friend and comrade, Dr. Nivedita Menon, who is teaching at JNU, and she's a political scientist, she's a women's rights activist. We have traveled many roads together, and since she's going to be talking about the book, I think it's only right कि वो हमें किताब के हवाले से हमसे बात करें. Thank you. Good afternoon, friends. It's a great privilege to actually see human beings in the flesh, friends and comrades and people who have been active in the struggle against Hindu Rashtra and corporate capitalism, to see you all physically here. Salam, Jai Bhim. And salam to the spirit of Father Stan. I never had the opportunity to meet Father Stan, but I can say that I have almost always heard about him and the work that he was doing. And he has inspired me, as he has inspired thousands of others, by the way he lived his life, with integrity and courage, finding his Lord Jesus Christ in the people that he chose to serve, the Adivasis of Central India. The life of this extraordinary man cannot be told apart from the history of the people among whom he lived. And that is what this book by Prakash Louis precisely does. Tells us the story of Father Stan as a story of that area and the people. And I think Father Stan could not have conceived of his own story in any other way himself. So the story of Dr. Stan is intertwined with the story of the dispossession of the Adivasis of Central India by the British colonial state, dispossession of their lands, dispossession of Jal Jangal Jameen, dispossession of their dignity by the colonial state, and then carried on by the independent Indian state until today. But it's also the story, not just of dispossession, but of relentless militant struggle against this dispossession by the Adivasis. We could go back to the Coal Rebellion and Birsa Munda in the late 19th century, to the sustained protests and struggles against the Netarhat,
firing range. This was in 1994. At the cost, this firing range would have been at the cost of massive deforestation and thorough dispossession of tribal land and people. 27 years later, that struggle is ongoing. This is the tenacity of Adivasis. This is the tenacity of the people among whom Father Stan worked. And Prakash Louis tells us the story. All that I'm saying today is from the book. And he tells us the story in this way. So from Birsa Munda to Netarhat, there is the Koel Karo project in 2001. There's the protest against SLR Mittal. And of course, currently ongoing Pathalgadi, where these big, as you know, the big stones, the headstones, an old death ritual has been transformed into a contemporary political movement which asserts the sovereignty of Adivasis over their lands, citing the authority of the Constitution of India. You know what Pathalgadi is, how inspiring it is, and how ironic but expected that a movement that bases itself on the Constitution is its leaders are arrested for sedition, because somehow this regime seems to think that its authority is greater than the authority of the Constitution. These are the circumstances in which Father Stan was working, and these are as much landmarks in his life and journey as they are landmarks in the history of our country. We cannot tell, and Prakash Louis reminds us that you cannot tell the story of Stan's life without the names of the Adivasi people who led these militant struggles. Dayamani Barla, Aloka Kujur, who considered Father Stan her dada or older brother, his fellow Jesuit priests and his students. Father Stan's was evidently not the life of an individual, but the life of a people, the life of an idea, of the idea of democracy, of justice, of equitable access to resources. For Stan was a Christian priest, deeply influenced by Marxist ideas of justice and distribution. And therefore he came under the firing range of not just the Indian state and of the powerful groups of this country, but he was not really very beloved, as we learn from Prakash's book. He was not really beloved of the conservative sections of the church either. So like most of us who set out on a journey in which Father Stan was one of our leaders, we are not beloved of, in a sense, our own people, nor the enemy. We have our own community. So Prakash tells us about an attempt that Father Stan made along with ISI. There's a very interesting account of a small village outside Bangalore where they found that there were 3 landlords and the cultivators did not have any authority over the land. They did not have access to the land, meaning they tilled it, but they did not have any rights over it. And so Father Stan, with a small group from ISI, decided to try and get implemented a government policy, land to the tiller. So they did the kinds of work that was needed, and they worked with the local administration, they worked with the landless cultivators, and the deputy commissioner was actually being very effective in helping them with this because it's a government policy. They were simply trying to get a government policy implemented. And it's actually very interesting to think about how radical it can be to simply try and implement an existing government policy. Of course, the power of the state came down upon them. The deputy commissioner who had seriously taken up the project was transferred. He was, as it were, kicked upstairs because he was sent on some foreign assignment. The Karnataka High Court gave a verdict in favor of the landlords. And in this scenario, we learn from the book that some local Catholic priests and the diocesan authorities asked that Father Stan be removed from Bangalore. But the Jesuit superiors stood in solidarity with him. So it was not an easy path that Father Stan trod. He not only challenged the powers outside, but he challenged his own community. He challenged his own people.
Gladson Dungdung, in an amazing and very moving forward to the book, he describes as ludicrous the claim of Hindutva forces that Father Stan was proselytizing Adivasis. Gladson says, I have never seen him offering mass in a church, let alone anywhere else. Gladson says that Father Stan's mission was not to convert Adivasis, but it was a mission of justice. So evidently, justice is a value and a goal that can shake the very foundations of the Indian state and Indian society. At the same time, I don't want to downplay the fact that Father Stan was a believing, practicing Christian who interpreted Christ's teachings in terms of a radical transformation of a deeply unjust and oppressive society and state order. Yesterday, when the news came that 8 years down the line, a probe into the killings of 8 Adivasis by a CRPF Cobra unit Jawan, 8 Adivasis had been shot dead and they were said to be Maoists. A judicial investigation was set up 8 years down the line. It has been found to be false. We could have told you that 8 years ago, but the judicial inquiry, which has taken 8 long years, has finally said that there were 8 unarmed individuals, Adivasis, 4 of them were minors, and they had nothing to do with Maoists. So there is a way in which as the repression of Hindutva forces continues, and as the Indian state continues to act as an agent of private capital, the militant struggles against this will continue at every level. Father Stan's courageous, principled, ethically grounded life and his tragic but dignified and inspiring death teaches us that injustice will always be met by resistance and that each one of us has a responsibility to history. Salam, Father Stan. Thanking you, I'd like to invite Professor Virginus Xaxa. Now, he has also been a friend and a fellow traveler and well-known, held high positions. मगर सबसे बड़ी बात उनकी यह है कि उन्होंने जो आदिवासी और ट्राइबल्स पे जो उन्होंने काम किया है, उस कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह से वो हमको एक तरह से he opened new vistas for us. I think that is something which we really need to know, and this is the right forum to understand it. You know, when आप जल जंगल जमीन की बात करते हैं और हम तो जमीन को ज़मीन कहते हैं, तो हम कहेंगे जल, जंगल, ज़मीन और ज़मीर. ज़मीर मीन्स कॉन्शियंस. वो ज़मीर जो कि इस पूरे डिस्पेंसेशन में मैं तो ज़मीर नहीं देखती, मैं तो सिर्फ जल, जंगल और ज़मीन देखती हूँ इनके दिमाग में, मगर ज़मीर कहीं नहीं है. सो जल, जंगल, ज़मीन और ज़मीर. ज़मीर की बिल्कुल खोखला है, जिस तरह से आपने कहा है कि खोखले और बेबुनियाद. ये खोखला और बेबुनियाद है, मगर इसकी तह में पहुंचने के लिए आई थिंक वी नीड टू लिसन टू प्रोफेसर वर्जीनियस काका. थैंक यू. Thank you, Vijayan and Prakash Louis, for this invitation to be part of this program. Well, I had met Fr Stan Swamy a couple of times. And my visit to him always invariably took place whenever I used to happen to be in Jharkhand. I'm not really from Jharkhand, but Jharkhand became one of my interests as well, because I find that in whole of the peninsular India, Jharkhand has been really a place where there has been a resistance, revolts, rebellions, dating from the
late 18th century to almost the contemporary times. In saying so, I'm not saying that it is not happening elsewhere, but Jharkhand is the hotbed of what has happened in the course of last 200 years. And that attracted me to Jharkhand and little bit do some reading and writing. But again, I'm not really very specialist in Jharkhand because I write in a much more general way. I think Father Stan, as I was reading this book by Prakash Louis, something struck me is that as early as in his early formation, just after finishing the school, Stan Swamy decides to join the Order of the Society of Jesus. That's amazing to me. That basically meant to me is that someone was driven by desire to do something for the ordinary, downtrodden, maybe the poor, the marginalized. And because precisely that the Jesuits, particularly in the 70s and 80s, have really been doing about it. So I can see that he anticipated that these are the kinds of works that probably, as being a Jesuit priest, he could really carry on. Because among the Catholics, Jesuits were really the most progressive sort of clergy. And so I think there was this drive. But at the same time, I thought that when I get the picture, not only from the readings of this book, but also the kind of writings that has come on Father Stan Swamy in the last, let's say, 1 year or so, that he was a very brave and very bold person. And I think this brave and boldness actually can be seen also at a very early childhood. Because rather than working in Tamil Nadu, where he was familiar with his language, with his culture, he eventually decides to move to Jharkhand as his field of the mission. Something I don't think he really knew about it. Jharkhand, which probably among the states, one of the most underdeveloped and probably one of the most poverty-stricken, but at the same time, there were a lot of space for movement and tensions and grassroots, what is called mobilizations and so on and so forth. Now, I'm not really going into the what has really been Jharkhand because Nivedita and Vrinda had already talked about it. But I think Father Stan Swamy did not initiate it on his own. He saw that there were movements happening all across Jharkhand. And he watched them and he just participated with them. And in the process of participation, he did realize that there is a certain kinds of vacuum in the grassroots leadership, or what you may call the organic leadership. I think this is where he really he comes in. He therefore began, basically as a human rights activist and influenced by Paulo Freire's The Pedagogy of the Oppressed, conscientizing them, trying to address the problem, trying to draw them to the structure of the locations in which they are, as to how the location in which they are is actually related to the national or state structure and the national structure, and how you find that it's also in a way related to the international structure. So, in fact, he's trying to build a kind of an understanding of the people who have been working, who have been participating in the movement, in terms of understanding, analyzing, and trying to find out a kind of strategy and a sort of plan of action. That's what really Father Stan Swamy really did. And so this he began when he was a director of Indian Social Institute at Bangalore, but the same work actually carried on when he came back to Chaibasa in Singhbhum. He tried to revive the Jharkhand Human Rights, Johar, the Jharkhand Organization of Human Rights. And then he also found that he was not interested in the kind of work he was assigned, and he did ask his superiors that I would like to the interior of the villages and do work. And therefore, he left the township of Jamshedpur and really going to Chaibasa, and even there he goes to the interior and starts working with them. No, so what basically
what I find fascinating in Stan Swamy is this whole idea of trying to see as to how to build a leadership through conscientizations and through training of the people who are actually engaged in the grassroots movements. That I thought was very, very fascinating. And also what I find fascinating is that Stan Swamy, actually everything that he was doing, he was trying to do within the limits of what constitutions has provided for the scheduled tribes or the Adivasis. And not only the constitutions, but the laws and legislations which were enacted by the state legislature or even the parliament. He didn't go beyond that. In that sense, he was very constitutionalist and very legalistic. And therefore, even those who are participating, he made them to understand the implications of the law. What are the constitutional rights? What are the laws that are in their favor? And basically, he taught them as to why, despite the constitutional provisions or despite the fact that the law, in fact, there are so much of problems, let's say, in the locations, in the habitations that they have been living in Jharkhand. That's what, and therefore, I think basically, he taught them that they have a rights and basically they should exercise their rights. And this is what he really was doing it. And therefore you find, for example, from the long period of Jharkhand, you find there is always a law which restricts the alienation of land from tribals, non-tribals. You have Chotanaagpur Tenancy Act as early as 1908. And there were some modifications that came up later on. But nevertheless, you find that all through post-independent India, land went on moving from the tribals, non-tribals. So you go to Jamshedpur. Jamshedpur was a Ho belt. Today you go in Jamshedpur and you will not find any Ho around that. There's no Ho village, there's no Ho people. This completely transformed. You go to Bokaro, you go to Giridih, you go to Dhanbad. No, this is what has really happened. And this is continuously happening even today. So I think Father Stan Swamy addressed this particular kind of questions of the alienation of land from tribals to non-tribals. That was one. But more importantly, one finds that the dispossessions and displacement by the state acquisitions of the land. And the state acquisitions of the land itself, again, if there is a law which restricts the alienation of land, then how do you use another act of 1894 in order to, okay, maybe eminent domain or whatever. But the constitutions also provides that in the 5th schedule, to my mind, is that the governor, the executive, has a right to use a discretionary power, that whatever law or whatever acts have been enacted by the parliament or its legislature is not to be applied in the scheduled areas if he thinks that it is adversely going to impact them. And these are all actions of the state is surely going to adversely impact them, whether you talk of the forest policy or conservation act, etc., all these. So in case of Adivasis, what Stan Swamy has been trying that as to how, though there are favorable laws, how the law itself has very adversely impacted them, because one kind of law was privileged as compared to the other kind of law. So if there were law which is pro-oriented to tribals, that was subservient to a law which in fact are trying to help the state in terms of acquisitions of land, in terms of infrastructure development, in terms of industrious growth, what is known as a public purpose, and so on and so forth. And therefore there is a great dilemma between what is public purpose and what exactly do Adivasis really form a part of that public purpose or public resource. And I think constantly in all through the post-independent India, beginning from the 1950s and even till today, even Jharkhand has been going through these big problems. And therefore, I think if I read and what's called the Stan Swamy, basically told them that you assert for their rights, and therefore implementation of the PESA. And since implementation of the PESA, unfortunately or fortunately, you find that the people took it as a Pathargadi movement, and in the process, they in fact made various kinds of slogans which was not really appropriate. But nevertheless, the PESA had already given them a right
and there was a legislation, and that was not really being implemented. And therefore, as a campaign, you find people began to enforce that on their own in their villages by writing all those provisions that was there in PESA and the Constitution and installed slab. That's what Pathalgadi movement. And when the Pathalgadi movement came, you find that the government really bounced on them, started arresting them under Naxals, under seditions, and you find large number of hundreds of people were actually put into jail and they were languishing. And it is to address this languishing of people into jail that Stan Swamy therefore took up the issues. We did a field study visited 18 districts, looked at how many people are in jails, we interviewed them, and on the basis of the interview, he finds that almost 97% were almost, they said that they have just been put, they don't know what purpose they are in the jail. So that is where you find that he took PILA and all that, and Vrinda Grover was a part of it, all that. So in other words, is not only therefore that he was going out of what is the rights and entitlement of the Adivasis, but also in terms of what they should do. He was never going outside of the boundary of the constitutions and the legal provisions. So if there is a protest, there is a movement, it should be within the boundary of that. And I think never, but since he was challenging, because the state was not interested in enforcing, and the enforcement of these acts, the kind of movement that were really happening, was going against the interests of the state, particularly so-called growth and so-called development, promoting the infrastructure, promoting industrialization. There was real contradictions between what was the imperatives of the state and what was the need of the Adivasis. And that's what I think Stan Swamy really drove this idea to the people. And he took them that you can take this up only through the peaceful, the constitutional and democratic protest, and that's what he did. So to say him that he was linked with the Maoists, that he was proselytizing, that he was anti-nationalist and all that, this is something that went to my mind, and as I have known him a little bit, there's nothing truth in it. So what we have to do, what I find, what lessons that we have to learn, I feel, is that I think in the movement, knowing the law, knowing the constitutional provisions is something very important for us. And it's precisely to what extent sometimes we find that the Adivasis are really lagging behind. And this is where you find the civil society organizations and activists actually have been trying to come and help them. So Stan Swamy, Sudha Bharadwaj was doing exactly that. And in the process, if you are going to help Adivasis, in order to get them empowered, in order to see that they assert their rights, although it may be constitutional legal, you have to be taught lessons. And that is where what really has happened to all of those who are in the Bhima-Koregaon case. They have been, all of them are a part of those who are trying to address the issues of the Dalits or the Adivasis. So that's the kind of question. So it is increasingly problematic even for the civil society organization now to move into an area, particularly of the Adivasis and Dalits, and you take up their cause, because the moment you move into it, there is someone big who is really watching you. And so there's a terrifying, there's a terrorizing, and therefore, therefore what you find is that probably state would like the tribals to remain in where they are, the fight on their own. And I know that it is very, very difficult to fight the state. They could afford the state, the colonial state, because they knew they have bow and arrow. The bow and arrow cannot really be used in a post-colonial democratic state where you find you have police, you have military, and so on and so forth. And therefore, only way in which one I can think is that in terms of knowing the law, knowing the constitutions, and how to take it forward, and what is to be done in order to take this agenda further. And this is what precisely, to my mind, Stan Swamy was really addressing or teaching the Adivasis in Jharkhand. Thank you. Working? Yes, working. Yeah. Thank you so much, Professor. I think you said something that there is this imperatives of the state and need of the Adivasi, right? I think that also
springs at us. And you have talked about the Pathalgadi movement. And I think in this book, Prakash has very well described this whole Pathalgadi. We kept reading about it. And then, you find the word and you realize what it really meant. So the whole idea of Schedule 5, which you have brought out very succinctly in your remarks. Thank you so much, Professor Kaka. And now I'd like to move to the author, who I have been talking about throughout, and I think that he would be, in a sense, he has really been even a mentor to me, much younger than me, but still mentored me in those very early days when I used to be on the governing body of Indian Social Institute, and a very long-standing friend. And now he's done something which hits very hard at what has stunned the nation, should stun the nation, and will stun the nation if this book really goes in as it is going in many languages, right? That is the strength of this book, and maybe this will be a catalyst in bringing about the change. So may I now request you to make your remarks, Prakash. Thank you. Johar, Jai Bhim, Jai Birsa, Jai Kisan. I bow before you because things have come to another circle. Friends here know maybe my last meeting here, program here, that was on indigenous people and local governance. We had it in the Constitutional Hall. Manishankar Iyer was the minister of the Panchayat Raj ministry. And when he had to speak, he looked at the title of the seminar that day, and he lambasted on us, the organizers, just on the word indigenous people. He said, Indian government has not recognized this word indigenous people. He should have just used the word scheduled tribe. And that was during a Congress regime. And today we are here to remember a great person, a great friend and comrade of all of us, who once again by his life showed, whether you call them Adivasis, you call them scheduled tribes, you call them tribals or indigenous people, the struggles of this group of people continues unabated in this country. So, in a sense, for giving me this opportunity to just initiate a book, and all of you at a time when we can't gather together, mobilize, organize, brought friends together, and to also release this book, I am extremely grateful to you. And also let me give this another information. Press Club refused to have the release in their location seeing the word Maoist. That's similarly in Bangalore. And I apologize to those friends. Nivedita told me milder words, disagreement with the Maoist or Martyr. But now I feel, I was struggling with the title, whether anti-national or martyr. But then finally went on to this bit polemical, Maoist or martyr, and the message has gone. And I think that is what we have succeeded, though inside, but under, as Nivedita herself said, the book speaks what these two terms are, both Maoist and martyrs. Just two incidents of Bihar and Jharkhand, my own personal experience, which led me to what I am possibly. In Arwal, during my days of church-related works, also my studies on the Naxalite movement in central Bihar, the village I stayed, there was lots of commotion early morning 7. I asked people, what happened? A Dalit went to fish in Punpun river. And the Ranveer Sena, those who know the history of Bihar and these movements, Ranveer Sena,
stopped him, called him in public, made him to spit, then asked him to lick. As he licked with a boot, they hit his head on the floor. You can imagine the impact on that person. I was witness to that, and that hurt me, that troubled me. I used to, those days, Bihar, Jharkhand came much later, 2000. Dumka area, working that side. Hot. We were that side. When we were there, we saw mangoes in the summer. A tribal woman bringing a tokri up arm. And before the price could be bargained, the local baniya took the tokri and threw it with a mound of the mangoes and threw a 5 rupee note on the floor. And the woman could not even say anything. And I asked people, how does it happen? Where does it? Then only I was told, all these are packed and sent to Calcutta, from where pickle is made and bottles are sold for 50 rupees, 100 rupees. And that's how economy of that time, neoliberal economy, has taken us even much forward. I think these were, like me or Father Stan, as Virginus very clearly mentioned, were also our own political journey. And Stan, which I tried to narrate, having been with him, working with him in various capacities. And what I had to write, I didn't call it a preface. I called it that we may not forget. In Hindi, it sounds better. It's not yaad rahe. Like in Hindi, which another 10 languages possibly, friends have taken to translate and publish because they saw, not that because just Stan, not that Prakash Louis, but the issue is very important. So there it would be written, Taki sanad rahe. Nobody should forget that this martyr spent his life not for himself, not even for the church principles for which he was part of, but he stood with the Adivasis whose life was nothing less than hell in any regime, well, whichever the political parties. Even after 2000, when Jharkhand became a separate state and Lalu Prasad said, on my dead body only the state would be separated. And today the things have become worse than what it was under that regime. And that's what I tried to capture. So the book, first and foremost, is dedicated to the people of Central India, Adivasis, and all friends like you, other social activists, tribal activists, and over 4,000 who are still languishing in jail, in whose cause Stan spent his time. And 15 of our friends who are still under Bhima-Koregaon inside. And why I want that? Because in my own church circles, there was a promise. When we took up Stan case, before that many of us did not even know Bhima-Koregaon issue existed. Once Stan was arrested, many of the church agencies became aware that there is something called a Bhima-Koregaon incident. And when we challenged why you are only taking up Stan Swamy's cause, we were promised that we will try to get Stan first, then we'll work for the release of the 15 people. But I think already his memory is short. Hence I thought I should capture that and tell my own church groups that Bhima-Koregaon is not over with the death of Stan. It will continue, it continues in various forms. And it is our efforts to carry it forward. As Syeda mentioned, Beguna Kaid, I think that had come in the right time. That's my inspiration. Along with Stan and many other friends, activists, you here, my own readings. And also the NIA agents asking Varva Rao's daughter, you are a Hindu, upper caste, your husband is a Dalit, why don't you have sindoor, sari? And these are the rascals who pretend to uphold the Indian culture, Hindu culture. Asking your woman, why are you in salwar kameez, not in sari? And it is this regime, this fascist, authoritarian, autocratic, and anti-Indians, anti-citizen regime,
which got somebody from Panchajanya in the name of Jai Tirath Rao to write in the name of just being a former Jesuit student and to say, you Jesuits are supposed to puja path karo, हमारे बच्चों को पढ़ाओ, MBA वगैरह कराओ, हमारे बच्चों को आगे बढ़ाओ, उसको छोड़ के तुम क्यों आदिवासी दलितों के पीछे पड़े हो? I wanted to expose people of Jai Tirath Rao and whatever background that he comes, to state that Stan stood first and foremost the struggles of the masses of this country, the Dalits, tribals, Adivasis, minorities, women, children, our youth who are losing jobs. I think that is his inspiration. His inspiration comes from the gospel, which he believed, which he lived. His inspiration comes from the social teachings of the church, which last year I brought out. The best kept secret of the church. Popes have repeatedly stated to make polemics, to divide, saying that faith has nothing to do with the practical life, is utterly nonsense. If you are a believer of Christ, you have to stand by those who are victimized, marginalized. And that is what Stan stood. And in that, whichever ism, whichever party, whichever traditions, background they came, Stan aligned with. And I think that is what some of us also want to live with. And thanks to all the friends. I can't take individual names. I thank everyone for giving me this an opportunity, for encouraging me to come out with something, and also being here to get this message going. There is both physical and mental fear, but we are able to stand, stick our neck out, and state what has happened to Stan is an totally, fundamentally, foundationally an institutional murder, and this country cannot go on. And we stand with his martyrdom. We stand with 15 of our friends who are still in Tajola jail, and we stand with thousands of Indians, political prisoners, for no reason of anything, still incarcerated, and we resolve to take up their cause. Thank you, Shukriya, Adab. It has been great to be with you. Let's continue the struggle. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया स्टैन। आखिर में मेरे ख्याल में विजय ने कहा था कि किताब की रिलीज़ होगी। बस मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आपने जो कहा है कि ये सनद है, ये हमेशा सनद रहेगी। और आपने क्रिश्चियनिटी के हवाले से कहा था और मैं इस्लाम के हवाले से कहती हूँ, आपने कहा था चर्च हैज़ नथिंग टू डू विद प्रैक्टिस। हम इस्लाम में भी यही कहते हैं कि जस्ट प्रोफेसिंग इस्लाम और प्रोफेसिंग क्रिश्चियनिटी एंड नॉट प्रैक्टिसिंग and not standing with the Dalits and those who are underprivileged and those who are marginalized, वो तो कोई मजहब ही नहीं हुआ, right? वो कोई मजहब हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ. So that's what we are standing for, and I think this has been an excellent session, even though, I mean, my moderation has been okay, but I think that my speakers have been outstanding. So let's give them a big hand before the release. Thank you. Thank you very much. I have a request. I have a request to the panel also to kindly come down so that we could stand together, some of you, and also not necessarily panel members, as many of you who would like to join. We should do the release of the book together. Adip. Adip bhai, are you? Hananda, Annie, Kavita, Sabha, Apurvanand, Rajendra Viji, Umaji, please come and join us. I think this is not about so we would like Rajendra bhai,
आइए सुनीता बहन, अनिता बहन सर आइए, और इनामुल भाई, नंदिनी, other friends, I'm just randomly calling out names. It's important that we all stand together for doing this release. As Prakash said in unconditional and unapologetic words, what Stan stood for, I think let us make this an event of celebrating and commemorating Stan as well. And thank you very much to the panel and Dr. Syeda had just to leave. Vrinda also had to leave. We will take with a fearful request that everybody should kindly come back. We will take a 5 to 7 minutes quick tea break. I think it's a correct time for us to do a tea break now. Thank you, Abba, for joining. I'm sorry I didn't take your name. So we will come back we'll do a 10 minutes break. We'll come back at 5 o'clock sharp. We have a panel to go, and that's going to be of mass organizations and friends and political leaders who will be speaking in the panel. 10 minutes break, 5 o'clock, please. फादर स्टैन स्वामी के बारे में और उनके साथ जो भारतीय राज्य ने सलूक किया उसके बारे में बहुत कुछ पहले सत्र में कहा गया है। जैसा प्रोफेसर खाका ने कहा, इस बात को याद रखना बहुत ज़रूरी है कि फादर स्टैन स्वामी दरअसल राज्य को समाप्त करने के लिए नहीं लड़ रहे थे, वे संविधान को ही लागू करने की लड़ाई लड़ रहे थे, जिसकी कीमत उनको देनी पड़ी है। और इस बात को बार बार कहा जाना चाहिए कि इस संविधान को लागू कराने का संघर्ष बहुत जोखिम से भरा हुआ संघर्ष है, जिस संघर्ष के खिलाफ खुद ये राज्य खड़ा हो जाता है। तो हम इस दूसरे सत्र में प्रवेश कर रहे हैं और मैं बुलाना चाहता हूँ मंच पर एनी राजा को, हन्नान मोला साहब को, आभा देव हबीब को, कविता कृष्णन को और अदीब साहब को। आप कृपया आप सारे लोग मंच पे, आभा, एनी, हन्नान मौला साहब, अदीब साहब। और मैं इस सत्र का संचालन गौतम मोदी करेंगे, मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ। गौतम मोदी, आप प्लीज़। I don't aspire to match Apurvanand's Hindi, so I'm not going to try it. But thank you, Apurvanand. This session is meant to look at how we respond to the gruesome manner in which Father Stan was sent to his death, how we respond to it politically. And I think that's really the most crucial challenge before all of us. And, you know, just sort of to kick things off, Gladstone Dungdung in his foreword to Reverend Prakash Louis's book calls him a Jesuit activist. I thought if there was an oxymoron, that was one.
And I think that is really the point about the political challenge and what we're up against. You know, we often forget that Jesuits have a very long journey within this country's idea of progress. And as a teenager, I remember the killing of Anthony Murmu, who very eloquently said, "I share the analysis of Marxists, but I don't agree with their method." And I think that in a sense is the idea of India. There are some in this room who do God, and different gods, and there are many in this room who do not do God. That, in a quintessential sense, is the idea of India. And it is that idea, this is only one part of the plurality of what brought us together in a rainbow coalition, if I can call it that, on the 15th of August, 1947. And you know, I'm always struck by this, especially on a day that Hindus celebrate as the birth anniversary of their Lord Ganesha. As a young trade unionist, as I was in Mumbai, I often passed a courtroom which had a plaque with Tilak's famous quote of not accepting the charge of sedition in 1908, unveiled by the first Indian Chief Justice of the Bombay High Court, Justice Hidayatullah, on the 15th of August 1947. And I'm struck by it on Ganesh Chaturthi, that part of the idea of India was also a search for a cultural Hinduism, which has acquired, which in fact, one of the many founders of that was Tilak in making Ganesh Chaturthi a public event. In the broad spectrum, to me, there are three dominant competing ideas. One of a socially just, equitable India, another driven by the deep urge of accumulation, and the third of a majoritarian religion, unambiguously present through the decades, whether we like to face up to it or not. And everybody in the parliamentary political class has dabbled with it somewhat opportunistically, giving a light to the situation we have. I think the book that we discussed this evening, in a way, sort of captures two parts of it, especially the fourth chapter of the book, in which there's, I thought, a very fine recording of the Chhattisgarh, the Chota Nagpur Tenancy Act, the basis for the 5th and 6th schedules of the Constitution, PESA, the FRA of 2006, and of course the Land Acquisition Act of 2013, interspersed with opinions of the Supreme Court on the eminent domain, reflecting the urge, the democratic urge for control over their own lives and their right to life by the Adivasi community of this country, which simultaneously is all through, from start to this minute, put down by the sedition law, by the UAPA, by state legislations, through the criminal justice system, be it the police, be it the prosecution, which is the executive, the courts, and even the jails, as we saw in the case of the glass with the straw and Fr Stan Swamy. So it's this
pull, so to speak, that we are up against. It's the pull, it's not a willy-nilly search for one company seeking land in Jharkhand. It is not willy-nilly another company seeking a mine space or a port space in Odisha. But it's actually the fundamental urge of capitalist accumulation, which I dare say is actually celebrated by the so-called steel frame of our constitution, the Keshavananda Bharati case. Many in this room celebrated the Keshavananda Bharati case's anniversary a few months ago, if I remember right. What we often forget is actually the Keshavananda Bharati's case enshrined property rights in our constitution. We also often forget that it was fought hard by 3 generations of lawyers from their senior counsel to the junior most, who are not just the most liberal lawyers of this country protecting the constitution, but also the dedicated lawyers of the House of Tata and many others. So we have a search for liberal values located within capitalism. We have a search for equity and social justice that's squarely outside the capitalist mode of production, competing for who runs, leads, defines, governs this country and builds our idea of India. In a sense, with the growth of Hindutva forces, or rather I would say with the institutionalizing of Hindutva, this challenge has become inescapable. Both challenges, the challenge of Hindutva and the challenge of capitalism. They are not easily separable. And I believe the way forward is, yes, to stand up and be counted. And I think many in this room have had to stand up in ways we did not expect until a year, 2, 3 years ago. There are many in this room who have been questioned hours and nights under the provisions of the UAPA. There are those in this room who are on those lists, may be questioned, may not be questioned, but have the Damocles sword hanging on their head. And that is actually not where our struggle ends. That's where today our struggle begins. To stand up, but also to stand up for a defining change which involves, if I may use for some an archaic word or phrase, the means of production too. And I'm going to open the discussion. I've spoken for 10 minutes. I'm sorry for taking 10 minutes of your time. And I'm going to request each one of the speakers to also restrict themselves to 10 minutes and monitor themselves on their own. We would need to wind up at 6. Vijayan's already told us that this site, which was aimed to discuss, debate the values of this republic outside of Parliament House, are now run by draconian laws, and we have a bill to pay which will have an add-on after 6 p.m. So we want to conclude at 6 p.m. That's the only reason to conclude at 6 p.m. I invite Mr. Muhammad Adib, a former Member of Parliament, to begin. मैं सॉलिडेरिटी ग्रुप का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने आज एक शहीद की किताब के इजरा पे ऐसे इंसान को जो अपने ही मुल्क में अजनबी बन गया हो उसको बुलाने दावत दी। ऐसी महफिलें जहाँ आप कैसे लोग हों वहाँ ज़िंदगी जीने की आरज़ू पैदा हो जाती है।
वक्त के साथ उम्र तो कम होती है, लेकिन ऐसी महफिलों में एक आरजू पैदा होती है कि और ज़िंदा रह लें। अपने मुल्क के जो हालात हैं उसके देखने के बाद कोई ख्वाहिश नहीं है कि और ज़िंदा रहा जाए। हम जिस मुकाम पे खड़े हैं इसका तसव्वुर तो हमने कभी किया ही नहीं था। कभी ये माना ही नहीं था कि मेरा मुल्क यहाँ आ जाएगा। मुजरिम सब हैं और शायद हम भी हैं। ख़ास तौर से हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़, इन्होंने अब आइडियालॉजी को ताक पे रख दिया। हुकूमत कैसे की जाए, इलेक्शन कैसे जीता जाए, ये मुद्दा हो गया। और मसला ये हुआ कि एक मखसूस कौम को कैसे सबक सिखाया जाए और सबक सिखा के कैसे हुकूमत की जाए, हम इसमें मस्त हो गए। जो पार्टियां थीं इन्होंने अज़ल से हमें फ़रेब दिए, कभी नकाबें डालकर, कभी लबादा ओढ़कर, और ये कहते रहे कि हम मुल्क को तरक्की कर रहे हैं। अब नारे लगते हैं, गर्व से कहो भारत माता की जय। कैसे कहें? जिस मुल्क में इंसान इंसान को मारकर जश्न मनाता हो, उससे कैसे कहें कि गर्व से कहें अपने मुल्क को? जहाँ यतीम और छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होता हो और सियासी लोग उसमें मुलव्विस हों, और फिर कहें कि गर्व से कहो। जिस मुल्क में, जिस शहर में हर जगह पुलिस दरिंदों की तरह मजलूमों के साथ सितम करे, अदालतें दसियों साल उसको जेल में डाले और सुप्रीम कोर्ट 20 साल के बाद कहे नॉट फाउंड गिल्टी, तो कैसे कहें? गर्व से कैसे कहें कि ये मुल्क जो है वह उसके लिए भारत माता की जय करें? मुश्किल तो ये आ गई है कि लोग डर गए हैं, सियासी पार्टियां डर गई हैं, और हमारी अपनी कौम, मैं समझता हूँ कि हमने गुनाह क्या किया हमें मालूम नहीं। हमने इसी कॉन्स्टिट्यूशन को, गांधी को माना, जिन्ना को ठुकराया, क्या गलती करी? हमने नेहरू को अपनाया, लियाकत अली खां को छोड़ा, क्या हमने गुनाह किया? गांधी को तो हमसे फ़ौरन छीन लिया गया, नेहरू को किताबों से गायब कर दिया गया। आज नेहरू सबसे बड़ा विलन बन गया जो हमारा हीरो था, और कोई पार्टी का लीडर, वो पार्टी जो उस पार्टी के वजूद है, वो खामोश है। वो इसलिए नहीं बोलती कि उसको खौफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेजॉरिटी कम्युनिटी नाराज़ हो जाए। मेजॉरिटी कम्युनिटी अब कमोडिटी है, कभी माइनॉरिटी कम्युनिटी कमोडिटी होती थी, इसलिए वो हमसे डरते हैं। हाँ, अगर आज के मौजूदा उनके लीडरों में से किसी के ख़िलाफ़ बोला जाए तो सड़कों पे आ जाते हैं। अभी पोस्टर निकला 75 साल का, नेहरू की फ़ोटो तक उसमें नहीं है, मौलाना आज़ाद की फ़ोटो उस पर नहीं है। उस मुल्क पे कैसे जय कह दें जहाँ कातिल, गांधी के कातिलों की जय होती है और उनके मंदिर बनते हों और उनके ऊपर 75 साल की लिस्ट में उनका सरफहरिस्त नाम होता हो? हम तो कम्युनिटी हैं, एक मुस्लिम कम्युनिटी। हम हमसे कोई पूछे तो हम पे क्या बीत रही है? हमारी आज समझ में नहीं आता कि किससे फरियाद करें, किससे कहें हम कि हमने अपने खून को बांटा था, हमारे पास ऑप्शन था। हमने कौन सा गुनाह किया है? क्या हमारी बस्तियों में हाईवे और ट्रेन की लाइनें नहीं बिछती हैं? कभी हमने रोकी है? लेकिन गुनहगार हम हैं। आज मुश्किल ये आ गई है कि जो लोग हाकिम वक्त हैं वो अपनों से कहते हैं, अपनों से सुनते हैं। कभी हमसे भी सुना होता, कभी हमसे भी को बताया होता, लेकिन
मुश्किल ये आ गई है कि एक कैटलिस्ट कौम है ये। अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, कुछ लोग यहाँ से आएंगे वहाँ से आएंगे, पॉलिटिकल पार्टियाँ सिर्फ अपने वजूद के लिए लड़ रही हैं, मुल्क की फ़िक्र उनको नहीं है। आज जिस शहीद के नाम पर यह किताब का इजरा हुआ, उसको सैकड़ों सलाम, न जाने कितने लोग। मैं खुद हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलों में गया हूँ, मज़लूमों के मुकदमे लड़े। 17 साल 18 साल के बाद अदालतों ने कहा नॉट फाउंड गिल्टी। 2% 1.5% मैक्सिमम कन्विक्शन हुए हैं इस मुल्क में, और इसके सब मुजरिम हैं। अगर किसी ने पोटा लगाया तो किसी ने टाडा लगाया और किसी ने UAPA लगाया, बग़ैर ये सोचे हुए कि इंसान इंसान को किस तरह से मारता है। जिस मुल्क की पुलिस भ्रष्ट होने के साथ कम्युनल हो, वहाँ समाज क्या बनेगा। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की, मैंने ये अल्फाज पार्लियामेंट में कहे थे कि इस मुल्क की पुलिस कम्युनल ही नहीं, ये भ्रष्ट भी है, और ये वो समाज नहीं बन सकता जिसका तसव्वुर गांधी और नेहरू आज़ाद ने किया था। हमारे तो सब कुछ जो भी थे हमने अपने बचपन में और आज तक यही सोचते रहे कि हमारे साथ जिना ने बड़ा जुल्म किया, लेकिन इस उम्र में आने के बाद सोचने लगा कि ये जो मंज़र है शायद जिना को शायद पता लग गया था। मैं ये नहीं कहता कि जिना ने कोई बहुत बड़ा काम किया, सबसे बड़ा सितम मेरी कौम के साथ किया है। मेरी कौम को उसने 16 अगस्त 17 अगस्त को ये मुल्क में इस ज़मीन पर मुसलमान दूसरे दर्जे का शहरी बन गया, लेकिन फिर भी हम आज तक कहते रहे हम उनसे बहुत बेहतर हैं, और आज भी हैं। लेकिन जिस मुल्क की तरफ ये मुल्क जिस सिमत की तरफ चल पड़ा है, मैं नहीं जानता। कहा यह जा रहा है कि पटेल अगर होते तो मुल्क अखंड भारत बन गया होता। मुझे कोई बताए कि अगर नेहरू ना होते ये मुल्क इस शक्ल में होता। जिना ने कहा था कि मुस्लिम मुल्क बनाएंगे, एक मुस्लिम कौम के नाम पर अलग मुल्क बनेगा। गांधी और नेहरू ने कहा यह मुल्क सबका होगा, सांझी विरासत का होगा। 38% मुसलमानों ने वोट भी मुस्लिम लीग को नहीं दिया था। 50 सीटें पंजाब में थीं, 1 सीट मुस्लिम लीग की आई थी, वो भी रिज़ाइन कर दिया था। बाकी सीटें सर सिकंदर हयात की और कांग्रेस की थी। और ये वजह थी, अगर फ़र्ज़ कीजिए सरवारकर की बात मान ली जाती और उस वक्त हिंदू स्टेट डिक्लेयर कर दी जाती जिसका आज दौर में नारा है, तो मुझे बताइए कि ये जो मुसलमान जिन्होंने जिना की मुखालफत की थी वो हिंदू स्टेट में तो नहीं रहते, वो सेकुलर स्टेट के लिए ऑप्ट किया था। तो पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता। ये एहसान तो माना होता इन लोगों ने जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं कि हमने वहीं तक रोक दिया था। नॉर्थ ईस्ट में जहाँ क्रिश्चियंस की आबादी है, क्या वो हिंदू स्टेट को अडॉप्ट करते? सिख क्या मानते कि हम हिंदू स्टेट में रहेंगे? लेकिन तारीख़ तो ऐसी लिखी जा रही है। मुझे इसकी शिकायत नहीं है कि हमको दुश्मन बनाकर, हमको सबक सिखाकर आप हुकूमत करें, लेकिन मैं बीजेपी के साथियों से कहता हूँ कि कम से कम पढ़े लिखे लायक लोगों की क़यादत तो की होती। वाजपेयी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, पढ़े लिखे भी थे, मुहज़्ज़ब भी थे, कोई परेशानी नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशन को समझते थे। वो जानते थे कि हमारा ईमान धर्म हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। मौजूदा हाकिम जो खुद कह चुके हैं कि हम 10वां पास हैं, उनके पास कंप्यूटर की एक डिग्री भी आ जाती है। एक
ना पढ़े लिखे आदमी से तवक्को क्या करेंगे आप। लेकिन मुश्किल ये है कि नौजवान बच्चा तारीख़ पढ़ नहीं रहा है, वो गूगल पे जाता है और व्हाट्सएप पे देखता है और नफ़रत की आंधियाँ ऐसी जलती हैं कि जली हुई लाशें बन गई हैं तासुब की। इनसे कैसे निपटा जाए। लेकिन हमने तो ये फैसला किया है कि जिस दौर में लोग मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस दौर में जीने की तमन्ना की है और वादा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रात। शुक्रिया अदीब साहब। बाकी सभी वक्ता महिला संगठन से हैं, ट्रेड यूनियन से हैं, किसान संगठन से हैं, लेकिन राजनीतिक दल से भी हैं, शायद एक को छोड़ के। अदीब साहब की बात ये थी कि मौजूदा संसदीय दल डर चुके हैं और वो सिर्फ अपने वजूद के लिए आज की तारीख में। तो एक तरह से चुनौती मैस मूवमेंट पे, मैस ऑर्गेनाइजेशन पे है। मेरे ख्याल से इस पे हाउ डू वी टेक दिस चैलेंज फॉरवर्ड, आई थिंक that's an issue I would ask, and start with Annie Raja of the National Federation of Indian Women. तमाम साथियों को नमस्कार। 8 मिनट पे थोड़ा बताइएगा, नहीं तो मैं बोलते ही जाऊंगी, ठीक है? ये बुरी आदत है। मैं इधर इसलिए नहीं हूँ फादर स्टैन के लिए, मैं इसलिए इधर हूँ मेरे लिए और मेरा जैसा बाकी तमाम, खास कर मेरे लिए मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि फादर स्टैन का गुनाह क्या थे? कोई गुनाह ज़्यादा तो किसी को मर्डर नहीं किया है, देश के विरोध में या क्या है जो पाकिस्तान के साथ मिलके कुछ गुनाह नहीं किया है देश के खिलाफ। उन्होंने सिर्फ इतना ही किया है कि वो जो बहुत मार्जिनलाइज्ड, बहुत एक्सप्लॉइटेड उन जनता के साथ खड़ा होके उनको अपनी आवाज़ का जो शक्ति क्या रिकग्नाइज करने में मदद किया। उनकी आवाज़ नहीं बना फादर स्टैन। फादर जिन आदिवासी, मूलवासी और जो ट्राइबल्स, विच एवर नेम वी कैन कॉल, उन जनता को अपनी ताकत, अपनी आवाज़ की ताकत समझने में मदद किया। वही था उनका गुनाह, मेरे ख्याल से और कुछ नहीं था। तो उस आवाज़ किस लिए? देश के विरोध में नहीं। हमारी देश में जो संविधान है, सब बहुत सारे साथियों ने बताया, जो अंबेडकर जैसे लोगों ने हमारे देश के लिए, देश की जनता के लिए जो दिया है संविधान, उस संविधान को इतनी सालों से और बहुत कोशिशें कर रहे हैं कि अच्छा एक शीशा की एक अलमारी में रख के बंद करो और इसका पलट के कोई ना देखे। इस किताब में, इस कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिया की जो किताब है, उसको कोई पलट के ना देखे। पलट के देखेगा तो समझ में आएगा, इसी का अंदर है हमारी सब कुछ। जो राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, उसी की बात बताया है इस संविधान के अंदर। फादर स्टैन ने उन आदिवासी जो जनता को यही चीज़ बताया कि आपकी हर चीज़ इसी किताब के अंदर है और आप खुद देखो, समझो। उन्होंने समझ लिया। पत्तलगड़ी उसी के रिजल्ट है। और ऐसे तमाम जो लैंड स्ट्रगल्स, जो मांग, वो उसी की
जो रिजल्ट है, जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, वो अपनी इस देश की हर एक व्यक्ति का, चाहे पुरुष हो, महिला हो, चाहे जो दूसरा जेंडर, हर जेंडर का लोग हो, कोई भी जेंडर हो, कास्ट हो, रिलीजन हो, रीजन हो, उनकी जिंदगी में उतार कर लाने का, जो ट्रांसलेट whatever is written in the constitution into the lives of the people of this country, particularly of the marginalized, वही काम किया है स्टैन ने। तो हम सब थोड़ा थोड़ा इतना, फादर स्टैन ने बहुत किया है, तो हम थोड़ा इतना इतना कर रहे, तो वो भी बहुत बड़ा गुना की लिस्ट में है इस फासिस्ट सरकार के चलते हुए। तो मैं बहुत, अभी किसी ने, आपने रेफर किया गौतम, मैं बहुत प्राउड फीलिंग कर रही है कि एक चैप्टर में जो दिल्ली राइट्स को लेके जो व्हाट इज दैट चार्जशीट, एडिशनल चार्जशीट के अंदर एक चैप्टर में 19 बार मेरा नाम है। आई एम सो प्राउड। इस सरकार को कहीं ना कहीं मेरा नाम भी लिखना का एक नौबत आई, ये मैं इनको यही बता रही, वो नौबत उनको आई। तो अभी हम ये सोच रहे व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, उसमें हमें ये देखना अभी हाल क्या है। हम सबको पता है, एक डेडली कॉकटेल ऑफ कैपिटलिज्म एंड फासिज्म, उसी के अंदर हम जगह ढूंढ रही है, दोस्तों को भी ढूंढ रही है। हम सबका आवाज़, अकेले अकेले की आवाज़ नहीं, सभी का आवाज़ मिलाना है और एक बड़ा क्या है उसको और बुलंद करना है, हमारी आवाज़ को, यही देख रही है। मेरा 2 एक्सपीरियंस में शेयर करके मैं समाप्त करूंगी। जो सैंडलवुड स्मगलर वीरप्पन को नैप करने के लिए जॉइंट टास्क फोर्स बनाई थी तमिलनाडु और कर्नाटका की, और जो इनका वीरप्पन को पकड़ने के लिए जो बहुत सालों की कोशिश किया ये जॉइंट स्पेशल टास्क फोर्स का, उसी के अंदर जो आदिवासी लोग, उनके साथ क्या नहीं हुआ। वर्कशॉप, बहुत अच्छा नाम है, पकड़ो लेके जाओ एक जगह पे, 2-3 एकड़ का वर्कशॉप है, महिला पुरुष सबको, मदर फादर सभी को, बेटा सबको उधर ही है। उसी वर्कशॉप के अंदर बेटे को बोल रही है माँ को रेप करो, रेप करवाया, ये हमारे देश में हुआ है। और जो इलेक्ट्रिसिटी, महिला को हर एक प्राइवेट पार्ट में, हर एक जगह पे उनका इलेक्ट्रिसिटी पास किया। जेल में रेप हुआ, बच्चा पैदा हो गया, बच्चे का नामकरण भी किया पुलिस ने। क्या नाम है? जेल सिंह। ये हमारी तमिलनाडु की बहनों के साथ, कर्नाटका का भी जो आदिवासी बहनों के साथ यही हुआ है। मेरा इंटरेक्शन ज़्यादा तमिलनाडु की जो आदिवासी महिलाओं के साथ है। उनको क्या जस्टिस मिला, इधर बताया। 8 साल 9 साल जेल में जो डाला गया, 1 साल वर्कशॉप में रखा और फिर जेल में डाला टाडा के अंदर। या ड्रॉप करना है ना सेकंड एग्जाम्पल। तो फिर बोला है कि आप सब निर्दोष है, चले जाओ। इसी के अंदर मैं क्यों बोल रही, इसका अंदर हमारी वे फॉरवर्ड के उसका अंदर बोल रहे मुझे इसमें कॉम्पेंसेट द विक्टिम्स हु वर फॉल्सली अक्यूज्ड एंड इनकार्सरेटेड इन जेल्स। ये सिर्फ कॉम्पेंसेशन से नहीं होगा, उनकी आने वाला जो जिंदगी का जिम्मेदार कौन है। आप 8 साल 9 साल जेल के अंदर रख के टॉर्चर करके कोई काम ना करना, फिजिकल काम नहीं करने का एक स्थिति में उस व्यक्ति को, महिला हो पुरुष हो, उसका आप इतना टॉर्चर किया और आगे आप फ्री कर रहे, बोले आप क्या है, आप इनोसेंट है, फिर कैसे जिएगी। सबसे पहली बार हमारी NHRC ने, वो भी हमने धरना किया, उस वक्त जस्टिस आनंद थे और नहीं सुन रहे थे इनकी बात, और हमने धरना किया उसके दफ्तर के सामने, तब सुना है। फिर NHRC 10 करोड़ जो इंटीरियम रिलीफ बताए, केस अभी भी चल रही है, कितनी और साल।
ओडिशा के कंधमाल में फादर प्रकाश आपने यू राइटली सेड, कंधमाल में आदिवासियों के साथ जो हुआ है, चर्च ने क्या किया? कितनी चर्च, कितनी लोग उन आदिवासियों के साथ खड़ा हुआ है। ये भी हमें देखने का है। तो मैं समाप्त कर रही हूँ कि इस डेडली कॉकटेल जो फांसीवाद और फासिस्ट फोर्सेस और ये कैपिटलिज्म, एवरीथिंग इज ऑन सेल, मैं उसमें नहीं जा रही। उस वक्त वो प्रक्रिया को भी हमें रोकने का है। और हमें मुझे मेरा मानना ये है कि इस वक्त कोई क्या है, ये जो पिक एंड चूज का ज़माना नहीं है। यदि कुछ लोग या कोई संगठन हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए आवाज़ उठा रहे तो उनके साथ खड़ा होने का, सॉलिडारिटी में खड़े होने का, उनकी वो जो मुद्दा बोले उस मुद्दे को आगे बढ़ाने का हमें देखना ही है। नहीं तो ये नहीं है कि वो कौन पहले उठाया और कौन कौन उसमें है। ये जो चीज़ें हमें अभी देयर इज नो क्या है, हमें इतना ये नहीं है कि ऐसा पिक एंड चूज करें। हम सबके लिए ये क्या है, एक्सिस्टेंस का, जिंदा रहने का, इज्जत से जीने का बहुत बड़ा एक सवाल हम सभी का जिंदगी के सामने खड़ा करके रखा है आज की फासिस्ट गवर्नमेंट ने और सारा जो संघ परिवार संगठनों ने। आज मुझे ये मैं समाप्त कर रही है, जो पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने मुल्ला की गला काटेगी और क्या क्या जो नारा नहीं लगाई। पार्लियामेंट चल रही है, 500 लोग इकट्ठा हो रही है, क्या कोई पुलिस रोका नहीं है? इसके खिलाफ हमने एक शबनम हाशमी और मैं जाके कंप्लेंट फाइल किया। वो कंप्लेंट फाइल करने के लिए हमें हंड्रेड्स ऑफ कंग्रेचुलेशंस आ गया। तब हमें वो ये समझने का है लोग कितना परेशान। एक कंप्लेंट फाइल करना इतना बड़ा क्या हो गया, मगर एक कंप्लेंट करने के लिए भी हमें 100 बार सोचने का एक नौबत में आज देश है, देश की जनता है। उस वक्त में हम सबको ये सारे चीज़ को लेके हम सबको एक साथ खड़े होके आवाज़ उठाना है और जो भी हो हम सब मिलके लड़ेंगे इसके खिलाफ। यही है फादर स्टैन स्वामी ने जो बोला है, What is happening to me is not unique. Many activists, lawyers, writers, journalists, student leaders, poets, intellectuals and others who stand for the rights of Adivasis, Dalits and marginalized and express their dissent to the ruling powers of the country are being targeted. People are targeted, whether they are whichever kya hai, intellectual or whatever may be, but people of this country are targeted, and this is the time we all must stand together. Thank you very much. Father Prakash, after a long time, I am seeing the anger. And I hope that your anger is, I told you, वो जो एंगर आपने इधर जो आपके अंदर है, वो एंगर हम सभी का मन में थोड़ा सा आपने दिया है। हम भी कोशिश करेंगे थोड़ा वो एंगर हमें we will have to look for that where has it gone. That is what we need to also introspect. Thank you very much. Inqilab Zindabad. Jai Bhim. Lal Salam. Abha Dutt Habib. I'm sorry, Abha Dev Habib, I'm so sorry, of the Delhi University Teachers Association, also a physicist. Okay, so yeah, from Democratic Teachers Front. साथियों, स्वामी स्टैन को मेरा इनकलाबी सलाम और उन सब की ओर से जो इस समय यहाँ पर नहीं हैं और उन सब के ओर से भी जिनकी ज़िंदगियाँ उन्होंने चेंज की, जिनके लिए वो लड़े। एंड मैं डॉक्टर प्रकाश लुइस को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने स्टैन के काम को हमारे तक पहुँचाया है, लोगों तक पहुँचाया है, उनके स्ट्रगल को भी हमारे तक पहुँचाया है। मैं अपनी बात एक एनेक्डोट से शुरू करूँगी और वो हो सकता है आपको नाइव लगे, लेकिन मुझे लगा अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में 3
रीडिंग्स हटाई गई माँ श्वेता देवी की और 2 तमिल दलित विमेन राइटर्स की, माँ एनसुकी धरिणी। और उसके ऊपर एक रिपोर्टर ने मुझसे पूछा कि ये आप पे पूरे सिलेबस को लेफ्टिस्ट सिलेबस बनाने का और देश को तोड़ने का इल्ज़ाम है, इसके बारे में आप क्या कहती हैं? तो मैंने कहा मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन किस देशद्रोही ने लिखा, क्योंकि हम तो वही कर रहे हैं जो उसने एनविसाज किया एजुकेशन के लिए, और उसने एनविसाज किया कि एजुकेशन पब्लिक गुड है क्योंकि वो इंडिविजुअल को तो स्ट्रेंथन करता है पर देश की डेमोक्रेसी और इंटीग्रेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और डेमोक्रेसी हम जब बढ़ाना चाहते हैं, स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, हमारे पास 50% स्टूडेंट जो हैं वो दलित, बहुजन, महिलाएं और इकोनॉमिकली वीक सेक्शन से आ रही हैं। वहाँ पर क्या औरतों की बात करना, दलित बहुजन की बात करना, उनकी लाइफ से जुड़ी हुई कहानियों को पढ़ाना किस तरीके से वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और मुझे लगता है इस आज के बातचीत में भी कॉन्स्टिट्यूशन और उसके राइट्स की बार बार बात हो रही है, और मुझे लगता है आज हम सबको सिर्फ एक ही प्रिज्म बनाना पड़ेगा, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। और वही प्रिज्म जो है 2 चीज़ों में करेगा, कौन उसके खिलाफ हैं और कौन उसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे ये लग रहा है कि फादर स्टैन स्वामी और जितने हमारे साथी, और यहाँ से वृंदा जी ने भी बोला कि किस तरीके से वो उन सबको जेलों में डाल रखा है जो सिर्फ डाइसेंटिंग वॉइस नहीं थे पर जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को दे रखा था लोगों के ज़िंदगियों को परिवर्तन लाने के लिए। तो वो उन सारी आवाज़ों को दबाना चाहते हैं। भीम-कोरेगांव का एक केस है, दिल्ली रॉयट्स दूसरा है। बहुत सारे युवा साथी जो हैं जेल में इस समय बंद हैं, और हमें लगता है कि आज हमें सिर्फ एक ही चीज़ की लड़ाई लड़नी है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे आगे हम ले जाएं। जहाँ तक सवाल ये है कि फादर स्टैन, मतलब ये किताब का नाम भी है कि वो माइस्ट थे या मार्टर थे, और अंदर माओ से पहले ये भी लिखा है कि वो ट्रेटर। तो मैं ये समझती हूँ कि हम जो फादर स्टैन की बातों पे और उनके काम पे विश्वास करेंगे, हमेशा उनको मार्टर कहेंगे, और एक स्टेट है जो उसको लेबल करना चाहता है किसी और तरीके से। और उसके बीच में एक बहुत बड़ी जनता है जो इस समय खामोशी में है और चुपचाप देख रही है हमारा प्रयास बाइनरीज को तोड़कर। हम उन चीज़ पे बहस ही नहीं करना चाहते जिस तरीके के सवाल हमारी वो फेंके जा रहे हैं। हमें चाहे अर्बन नक्सल कहा जाए या नक्सल कहा जाए या माओइस्ट कहा जाए, हमें इसका जवाब ही नहीं देना है। मैं ये समझती हूँ, मैंने अपना यहीं से बात शुरू करना चाहती हूँ, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की बात करनी है। हम चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो, वो ज़मीन पे भी लागू हो, और कॉन्स्टिट्यूशन ही हम सब के लिए हम एक करने वाली चीज़ है। और मुझे लगता है हमें उसी तरीके से बहस करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए कौन मार्टर है कौन नहीं है, ये 2 लोगों के बीच की बहस हो सकती है। इस बहस में हमें, मुझे नहीं लगता है कि आम जनता का समय निकालना है। बस मैं एक और आखिरी बात कहूँगी कि सरकार के पास पेगासस जैसी चीज़ भी है और वो कंप्यूटर्स पे प्लांट भी कर सकती है चीज़ें, उधर उसके हाथ में UAPA और वो सब कुछ है। और फिर मैं कहूँगी कि हमारे हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की अस्मिता की लड़ाई है जिसको हम सब लड़ रहे हैं। और यहीं पे अगर आप रिसेंट टाइम्स में देखेंगे कोई मूवमेंट जो बहुत सुंदर हो, वो CA NRC का मूवमेंट था। सरकार ने, या आप सरकार में बैठे BJP RSS पूरा उस चीज़ का देखें तो जिस तरीके की बाइनरी में वो मुसलमानों को बांधकर एक शुरू करना चाहते थे कांड, CA NRC के मूवमेंट ने उस बाइनरी को तोड़ के फेंक दिया। वो एक पहला मूवमेंट था जिसमें युवा साथियों ने कॉलेज टू कॉलेज प्रीएम्बल पढ़ा। और मुझे लगता है कि हर एक मूवमेंट के साथ जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट क्लॉजेस, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के हों चाहे वो प्रीएम्बल हो, हमें उन चीज़ों को रिट्रेट करना पड़ेगा और एक्शन प्रोग्राम्स में लोगों के हाथ में प्रीएम्बल्स देने पड़ेंगे। और उस CA NRC से जो सुंदर चीज़ें निकली हैं उसको हमें रेप्लिकेट करना पड़ेगा अपने मूवमेंट्स में। इसी के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। और मैं, जैसे यहाँ पे साथियों ने अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में कहा कि हम, हो सकता है
10 साल से तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमें लड़ते हुए हो रहा है, एजुकेशन को बचाते हुए, और एक वाइस चांसलर, दूसरा वाइस चांसलर, JNU में भी हमने कांड देखा। पर जब थकने लगते हैं, कभी कभी थकते भी हैं, ऐसा नहीं है, लगता है अभी तो लड़ाई शुरू हुई है तो हमें कहीं से ये एनर्जी लानी है, और ये जो सांझे प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, मुझे लगता है ये वो एक दूसरे को एनर्जी देने का है, आप एक को लगे, दूसरे को लगे, साथ मिलकर चलने का है, और हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। हम इसी विश्वास के साथ इनकलाब जिंदाबाद। जौहर साथियों। थैंक यू। कविता कृष्णन, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन्स एसोसिएशन की तरफ से। साथियों, मैं बहुत कम समय लेने की कोशिश करूँगी। मैं शुरू में बस ये साझा करना चाहती हूँ, मैंने आज यहाँ कहा था कि मैं याद करना चाहती हूँ कि फादर स्टैन से द सर्कमस्टांसेस इन विच आई लास्ट मेट हिम, he had very generously offered Bagacha for a meeting of the members, of the leadership of the All India People's Forum, which was an attempt by several of us across various ideological boundaries to try and come together to find better ways to resist the assaults on democracy that we are facing. तो उन्होंने इतने जेनरसली अपनी जगह दी थी, वहाँ पर वो मिले थे, उनके कमरे में हम लोग बैठ कर के बात किए थे, और उन्होंने सारा समय एक तरह से हम लोगों से उनका जो काम था, मूल काम था, उसको ले कर के बात किए थे। और क्योंकि उसी तरह का काम AIPF के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स तमिलनाडु में भी कर रहे थे, और जो कि था कि जो आदिवासी थोक में जेलों में भरे पड़े थे और उन पर बिल्कुल बेबुनियाद आरोप और बिल्कुल बहुत ही ड्रैकोनियन लॉज के तहत वो अंदर थे, तो उनको बाहर निकालने का काम, उनके मासूमियत को साबित करने का काम, इस काम को ले करके खूब बातचीत हुई थी। और इसमें जो बेकार की बहसें, कोई बहुत कोई स्टेल आइडियोलॉजिकल डिबेट के लिए कोई जगह ही नहीं थी, क्योंकि बात बहुत साफ था कि जिन्हें जेल में नहीं होना चाहिए वो जेल में हैं, और उनको बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और वो ऐसे तबके से हैं जिनके लिए बोलने के लिए, जिनके लिए लड़ने के लिए, जिनके लिए वकीलों की ज़रूरत है, सारी चीज़ें वो है नहीं। वो आपके 70 साल 75 साल की आज़ादी में वो स्थितियां हैं नहीं। तो जितने लोग एक तरह से वहाँ जाकर इन लड़ाइयों को लड़ते हैं, इन सच्चाइयों को सामने लाते हैं, आज वो भीमा कोरेगांव केस में अंदर हैं। ये सच्चाई है। इस सच्चाई से नज़र हटाने के लिए अब उनके अपने विचार क्या हैं, क्या उनमें से कुछ जो है उनको माओवाद अच्छा लगता है, वो विचार वैचारिक रूप से माओवाद को मानते हैं, नहीं मानते हैं, दैट इज़ इररिलेवेंट। नोबडी हैज़ एनी बिजनेस आस्किंग दैट क्वेश्चन। और मैं ये भी समझती हूँ कि फादर स्टैन स्वामी की हत्या जिन संदर्भों में हुई, मैं जानती हूँ कि जो लोग वकील हैं, जो इन केसेस को लड़ते हैं, उनको शायद कोर्ट के बारे में कभी कभी कहना पड़ता है कि नहीं जजों के बारे में थोड़ी अच्छी बात भी कहनी पड़ती है कि नहीं भाई अच्छे लोग हैं। फादर स्टैन की हत्या के बाद मैंने देखा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के जिन जजों ने वो बड़े डिफेंसिव होकर के कह रहे थे कि नहीं हमने तो, उन्होंने जो मांगा सब तो दिया, और हम तो नहीं समझ रहे थे कि वो उनकी डेथ हो जाएगी। तो उन्होंने तो आपके सामने खड़े होकर के कहा कि मेरी मौत होने वाली है, आप मुझे प्लीज़ बेल दे दीजिए, हेल्थ ग्राउंड पर बेल दे दीजिए। पार्किंसंस जिस व्यक्ति को हो, जो बुज़ुर्ग हो, 70-80 साल के हो, और वो पार्किंसंस की हालत में सिर्फ मौत की बात नहीं है। माई फादर हैड पार्किंसंस एंड आई कीप थिंकिंग अबाउट दैट वो जो डिग्निटी के साथ इंसान रहेगा, वो जेल के अंदर संभव है क्या? हमारी जेलों में साईं बाबा जेल में है। साईं बाबा क्या विथ हिज डिसेबिलिटी, इज इट पॉसिबल टू लिव विद डिग्निटी इनसाइड जेल? In our jails? No, it's not. So you have no business keeping somebody like that in jail. आपको नहीं रख सकते उन हालातों में। अगर वो कोई गुनाह भी उनकी साबित हो जाए तो आपको दूसरे हालातों में, डिग्निफाइड हालातों में आपको रखना होगा। ये तो सीधी बात है। और एक बात, और इसलिए मैं मानती हूँ कि कम से कम भीमा कोरेगांव केस में जो बाकी लोग हैं उनको लेकर के हमें एक अभियान बिल्ड करनी चाहिए। उसमें मेरा एक आइडिया हमेशा मेरे मन में रहता है कि भीमा कोरेगांव जो केस था, जिसमें हत्या हुई दलितों की,
उस हत्या में जो लोग शामिल हैं उन और उस हत्या के जो विक्टिम्स हैं उनके लिए न्याय की मांग, और ये जो एल्गार परिषद और जनरली जो जो बहाना है जिसके बहाने हमारे देश के सबसे बढ़िया ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स, सबसे अच्छे लोगों को अंदर किया गया है, उन दोनों की लड़ाइयों को कैसे उनको डिवोर्स करके रखा है पब्लिक व्यू में, इसमें कैसे उसको एकजुट करके दोबारा हम लोग उठाएं, इसके बारे में हम सोचें। एक आखिरी बात मैं कहूँगी, इस किताब के टाइटल को लेकर के मुझे एक थोड़ी सी शिकायत है प्रकाश जी से, और मैं एक आइडिया सजेस्ट करती हूँ कि शायद जब इसका अनुवाद हो तो कुछ दूसरा सोचा जाए। ग्लैडसन डुंगडुंग ने बल्कि जो यूज़ किया है ट्रेटर और मार्टर, वो मुझे ज़्यादा सही लगा। मैं क्यों कहती हूँ, मुझे याद है कि वो कनाडा के एक लीडर हैं, सिख लीडर हैं जगमीत सिंह, और उनको जब किसी ने गाली दी मुसलमान कह करके कि तुम आतंकवादी हो, तो उन्होंने जवाब दिया, और बाद में उन्होंने उनसे किसी ने पूछा कि आपने ये क्यों नहीं कह दिया कि मैं तो सिख हूँ, मैं तो मुसलमान हूँ ही नहीं। तो उन्होंने कहा लेकिन अगर मैं ये जवाब दूंगा तो इसका मतलब मुसलमान अगर मैं होता तो मुझे गाली देना, मुझ पर नफरत करना ये सही हो जाता। आखिर ये राज्य क्यों नक्सली नक्सली कहता है तमाम जन आंदोलन के लोगों को, चाहे वो गांधीवादी हो, चाहे वो कोई वादी हो, चाहे वो जेजुइट हो, क्रिश्चियन हो, वो कोई हो, क्यों कहता है? क्योंकि इस देश के एक बहुत बड़े राजनीतिक तबके ने, एक तरह से रूलिंग क्लास कहिए जो कहिए, उसने स्वीकार कर लिया है कि नक्सली को ह्यूमन राइट्स का अधिकार नहीं है। और उसमें मुझे याद है कि शायद वो हमारे दोस्त थे जो बाल गोपाल थे शायद, या आई थिंक इट मे हैव बीन जस्टिस the human rights lawyers in Andhra who argued in court for the rights of the Naxalites, and जब उनसे जज ने पूछा कि भाई आप संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान तो ये मानते ही नहीं, तो जो नहीं मानते उनकी बात आप क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा अरे वो दरअसल यहाँ ट्रायल पर नहीं है, आप और आपका संविधान यहाँ पर कटघरे में है जज साहब, और इसीलिए आपको जब आप संविधान मान रहे हैं कि नहीं, आपसे पूछा जा रहा है। और मुझे लगता है कि एकदम जो बात आभा ने भी कहा, मैं उसके साथ हूँ। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि ये जो लोग हैं और जो दिल्ली में भी दंगों के बहाने जो अंदर हैं, सच्चाई सबके सामने है कि इन केसेस में कुछ भी नहीं है। इनकी आज़ादी के लिए, इनकी रिहाई के लिए और न्याय के लिए लड़ने का काम ज़रूर हम लोग करते रहेंगे। सबको जोहार और सबको जय भीम लाल साहब। कॉमरेड हानन मुल्ला, ऑल इंडिया किसान सभा से जो कुछ चंद घंटों के लिए किसान का संघर्ष छोड़ के यहाँ पे आए हैं। साथी गौतम भाई, distinguished speakers and my friends. In the beginning of this session, the distinguished panelists have explained the content and purpose of the publication, and उसके साथ साथ ही हमको कैसे आगे बढ़े। हमारा स्पीकर ने बताया कि आज जो है ये जो शोषण का यंत्र है हमारा राष्ट्र, इसका 75 साल हुआ, मेरे भी 75 साल शुरू हुआ, ख़त्म होने वाला है। तो 75 साल में क्या हुआ? एवोल्यूशन हुआ। अत्याचार का जो मशीन है उसके एवोल्यूशन हुआ। हम बचपन से सुनता था, क्या था, एस्मा था, मीसा था, DI रूल था और क्या क्या सब ना था, मैं पूरा याद नहीं है। और उस सब के बाद आज सर्वोच्च जगह में UAPA आया है। ये विकास हुआ है, अत्याचार का विकास हुआ है 75 साल में, और इसी का शिकार है हमारा फादर स्टैन जी, इसका शिकार है। ये बात है किसी का ओपिनियन के वजह से किसी का दोषी नहीं ठहर सकता। ओपिनियन हो, जब तक कोई जमीन में कोई साबोटेज ना करे, कोई अत्याचार ना करे या राष्ट्र को उखाड़ के फेंकने की साजिश ना करे प्रमाणित रूप से, आप उसको दोषी नहीं ठहर सकता। ओपिनियन, सिर्फ ओपिनियन के लिए किसी को देशद्रोही समझना हमारा देश के संविधान में भी नहीं है। मगर यही होते जा रहा है। हमारे जितना कानून को मजबूत किया जा रहा है और विकसित किया जाता है, शासक वर्ग जितना खतरे में पड़ रहा है उतना ही तेज हो रहा है। पहले का शासक वर्ग काला कानून बनाया था,
वो जितना खतरे में था, आज के शासक वर्ग उससे ज़्यादा खतरे में है। इसलिए वो और भी मजबूत किया उसको बचाने के लिए, क्योंकि उसका जो फिलॉसफी है हम मानते हैं वो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। और जो संविधान हम मानते हैं, सब लोग बोला है, ये संविधान को वो कब्र में भेजने का तैयारी चल रहा है। ये संविधान नहीं रहेगा, मनुवादी संविधान, मनु संहिता हमारा देश का संविधान होने वाला जाए, वो हम उसके खिलाफ जो बोलेगा देशद्रोही होगा। मनु संहिता में नारी अधिकार नहीं है, अब नारी अधिकार बोलेंगे तो संविधान विरोधी है। मनु संहिता आदिवासी के बचावे, आज आदिवासी बोलने के लिए शायद उसका हमारा प्रकाश का जेल हो सकता। अभी वो वनवासी कहो, आदिवासी मत कहो, आदिवासी वो आरएसएस मानते नहीं, तो वनवासी नहीं कहोगे तो तुमको जेल में जाएंगे, देशद्रोही हो जाओगे। केरला यूनिवर्सिटी आज देखा, इंस्ट्रक्शन दिया है, कोई क्रिटिसिज्म करेगा तो उसको देशद्रोही माना जाएगा। अरे क्रिटिसिज्म नहीं करेगा तो संविधान, जनवाद, अपना ओपिनियन, राइट टू डिसीजन, जितना सारे हमारा देश में आज था वो तो ख़त्म हो जाएगा। मगर ये हो रहा है, और सारे यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में वो क्या पढ़ाने जा रहा है आप देख रहे हैं अखबार में, क्या पढ़ाएंगे, उग्रवाद के साथ किया है वो सब पढ़ाएंगे। कलकत्ता यूनिवर्सिटी विश्वभारती टैगोर का तैयारी यूनिवर्सिटी में एक वाइस चांसलर है, वो क्या किया, वो कोई डेमोक्रेटिक राइट्स के बात कहने के लिए वहाँ आरएसएस का जो फिलॉसफी वहाँ पढ़ाने का फैसला किया है। और केरल का तो मैं उदाहरण दिया ही है। तो आज शिक्षा संस्थान ने ये है जनवाद को हत्या करना, डेमोक्रेटिक राइट्स को ख़त्म करना, और इंसान को हैवान बनाने के मशीन बनाना चाहता है। इंसान के अंदर इंसानियत ख़त्म करने के लिए ये योजना चल रहा है। इस योजना के खिलाफ बगावत करना उचित होगा, ये बगावत सही होगा, क्योंकि ये हमारा सब कुछ को बदलना चाहता है, हमारा इतिहास को बदलना चाहता है, हमारा जियोग्राफी को, हमारा इकोनॉमी, सब कुछ, और बोल रहा है कि हमारा ये देश को हम बेच देंगे सब। हमारे गांव में कहावत है कि बाप दादा ने सालों से जितना मेहनत करके जमाया था, एक लौंडा बदमाश सारे बेच के खा गया। आज हमारा 75 साल में जो हम बनाया था, एक लौंडा आके बर्बाद करने का काम कर। मैं 30 साल में पार्लियामेंट में था और करीब 9 प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्ट मेरा रिलेशन था, काम करने का मौका मिला है। मगर इतना जो क्या बोलूँ, इतना घटिया इंसान 9 प्राइम मिनिस्टर को आसपास कोई देखा नहीं था। इसका हर तरह से, इसका सोच हो, इसको बातचीत हो, इस झूठ बोलने का कैपेबिलिटी हो, जनता को मिसलीड करने का साजिश हो, आरएसएस का लाइन के उतार इंसान को बांटना, मारना, ये सब जो हो, किसी में किसी का तुलना नहीं चलता, किसी का नहीं चलता। सबके अंदर कम बेसी गलतियाँ मैं नोट किया था, लड़ता था, मगर ऐसा गलती मैं कभी नहीं देखा था। आज इसलिए हमको ये बात नया सिरे से सोचना पड़ेगा कि इसके हाथ से देश नहीं बचेगा तो हम कोई नहीं बचेगा। और इसको हाथ से बचाने के लिए हमको आज जो फादर जो लड़ाई लड़ा था आदिवासी के लिए, आज आदिवासी को आज क्या हो रहा है झारखंड में, सब है पता, सारे बात आप सबको मुझसे ज़्यादा मालूम है, आपके सब किताब में सारे लिखा हुआ है हर बातें। तो इस सब को लेके जो लड़ना है, आज इसके सामने, हमारा सामने लड़ने के बिना कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि ये जो फैसिस्ट आइडियाज़ है, उसका जो फिलॉसफी है, उसका एक्टिविटीज़ है, उसका डायरेक्शन है, उसका कानून है, जो कुछ होगा वो फैसिस्ट तरीक़ा से हमारा संविधान, जनवाद सबके खिलाफ जाएगा। हम सांस लेना चाहता है तो हमको इसके खिलाफ बगावत करना है। हमारा सांस लेना आज बंद होने जा रहा है, क्योंकि हमारा जो संस्कृति, हमारा जो मिक्स संस्कृति, हमारा जो भाईचारा, हमारा इतिहास, ये जो हम हजारों साल से विकसित किया था, वो सब छीना जाएगा। और वो छीनने से हम जी नहीं सकता। हमारा सांस आज खतरे में है, और ये सांस को बचाना है तो सांस रुकने वाला, जो ख़त्म करने वाला जो ताकत है, उसको हमको मुकाबला करना पड़ेगा। यही हमारा सामने लक्ष्य है, और स्टैंड हमारा सामने एक मिसाल है कैसा लड़ना है। यही ऐसा ही लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है, लड़ते लड़ते मरना है, मगर फिर भी लड़ना है। लड़ाई के बिना हमारा जीने का रास्ता नहीं है, ये हम देख रहे हैं। कि मैं भी लड़ाई के मैदान से यहाँ आया हूँ, हमारा आपको मालूम है 9 महीना हम रास्ता में बैठे हैं। कोई डेमोक्रेटिक देश दुनिया में है जहाँ
उसके बात नहीं करेगा। सब समस्या का हाल तो बात में होता है, मगर सरकार, किसान 90 करोड़ किसान लड़ रहे हैं, 9 महीना हो गया, 600 हमारा साथी का डेथ हो गया, 2 मर्डर हुआ, 600 ऐसा अंदर लड़ाई में मरा, मगर सरकार का पास टाइम नहीं है बात करने का, शुद्ध झूठ बोल रहा है। हम चाहते हैं चर्चा करेंगे, एक टेलीफोन के दूर में है, एक टेलीफोन कितना दिन लगता है, 6 महीना लगता है एक टेलीफोन करने के लिए, कितना झूठ हो सकता है आप बोलो। तो इसलिए देखा ये सरकार कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं, वो चाहता है कि हम हार के चले जाए, यही साजिश है और कुछ नहीं है। इसलिए ये साजिश ही इसका तरीका है, साजिश करना ही इसका लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन है, और उसको पूर्ण रूप देने के लिए इस संविधान को ख़त्म किया बिना 26 जनवरी चला जाएगा, 26 नवंबर आ जाएगा, ये आएगा, सारे कुछ आएगा। जो आज़ादी का लड़ाई में ब्रिटिश को तालू चटने वाला था, जिसको पूर्व पुरुष, वो हमको सिखाता है देशप्रेम किसका कहते हैं, देश को कैसे प्यार करना है। अरे देशद्रोही तो तुम्हारा खून में है, तुम्हारा बाप का खून में था, तुम्हारे दादा का खून में था, देश के साथ गद्दारी करना, ब्रिटिश को तालू चटना तुम्हारा इतिहास है, और तुम हिंदुस्तान के इतिहास को बर्बाद करना चाहते हैं। आज इस परिस्थिति में हमको बहुत मजबूती के साथ, खतरा बहुत मोड़ लेना पड़ेगा, मगर वो खतरा को सामना करते हुए इसको मुकाबला करना है। और ये जब तक रहेगा, हमारा ख़त्म होने का रास्ता तेज़ी से आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए हमको जीना है तो इसको वो दूसरे जगह भेजने का इंतजाम करना पड़ेगा। एटाई हुए स्टैंड के पार हमारा सच्चा श्रद्धांजलि स्टैंड के प्रति। धन्यवाद। You know, whether it's the localized Pathalgadi movement, and there's little doubt that our brothers and sisters in Jharkhand have resisted land acquisition with perhaps no parallel, or it's the Kisan Sangharsh that is underway today and is calling for an all India Bandh on Monday, which we will all join. We are yet to turn the corner. And we have, as mass organizations and mass movements, a very serious challenge of coming together and to be able to mobilize as one across this continental-sized country. And part of that problem is the idea of India, that we are not just, that continental-sized country means we are not just a very diverse people, we are also a very diverse political people, we are a very diverse linguistic people. MSP in Tamil Nadu and MSP in Punjab both happen, both matter, but are decided by 2 different governments, one by the union government and one by the state government. That's just one of the many hundred differences or millions of differences that divide us. And this, in a sense, is, I think, a challenge that we really have to work together. I remember being in this room, perhaps on the 9th of August 2019, when we all came together. Of course, there was no COVID. Comrades were sitting on the floor when we came together to see how we were going to resist the reading down of Article 370. Many of us have come into this building. And somebody might say that there's democracy still in this country because you can meet in the Constitution Club and remember Stan Swamy and celebrate Reverend Lewis's book. But democracy is complex, and this is a complex country. And I think the challenge really is before us. I believe all of us who put our name on the invitation to this meeting are very grateful to every one of you who came here. Of course, we're also very grateful to all of you who came in and spoke. But really, I think we must say this as the progressive movements of this country, in all our diversity, that the challenge still lies ahead of us. And I would join Syeda Apurvanand, Pancholi Sahab, Roma, Anirban, Rajendra Ravi, Uma Chakravarti and Vijayan in once again expressing our gratitude for everyone joining us. And I think for many
who live in the city. This has been the first, as Nivedita said, this has been the first public event. And I think we need to find ourselves back on the streets of this national capital to show that this national capital belongs to us. For 10 months, this government has said to the Kisans of this country that this capital is not yours, it's ours. We're going to rebuild it, and all you can stay is on its precincts. And that is a tide we have to turn. And that is, I believe, the celebration would be the celebration of the work of Stan Swamy and everyone like him, and the many who are still incarcerated and in the jails of this country for acts they did not do, for charges that can never be proved, the charges that haven't been leveled either. Thank you very much.